begin our next session, these are the people who are all civil servants coming from Scindia School. और इनको साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूं सुबोध जी क्योंकि आप तूफानों से लड़ते हैं। अतुल जी, आप तूफानों से लड़ते हैं, तो साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफानों से लड़ने में मजा कुछ और ही है। नाउ मे आई कॉल अपॉन यशराज नयन to take up and chair the session with all civil servants here in our presence. Yashraj Nayan, please give him a big hand. He is an IRS officer, one of the youngest IRS officers. Very good afternoon, dear Scindians, ladies and gentlemen. This is a session on civil services, and we have very distinguished civil servants amongst us. Just before starting, I would be remiss if I don't tell you that I just now had been transported back to the Scindia days when our seniors would used to give us a pep talk just before we are going on stage. I was sitting in the 4th, 5th row, and Sandeep Agarwal sir was sitting next to me, and just as Major Shah would go in eloquence about his Kargil experience or the Shairi, Sandeep sir would nudge me and something to learn from. Just see the vehemence. You don't smile, just keep smiling when you are on stage. Give that natural smile. So it transported me back to the Jayaji House days when we would be given a pep talk by our seniors, and I hope that I'll be able to deliver some of it. I have with me 4 pages of profiles on the distinguished civil servants that are with us, and I was just going through the profiles when Sandeep sir told me, will you be reading? Don't read on the stage. Look at the audience. Do not read at the paper. But because the tenure is so long and there have been so many positions, I'll have to refer to the page, sir. Let me start with the first panelist, Dr. Atulya Mishra. Sir passed out from Scindia School in 1983, Mahaji House. He is a senior officer in the government of Tamil Nadu who joined the Indian Administrative Service in 1988 and has been in public service for more than 3 decades. Dr. Atulya Mishra completed his bachelor's in botany from the Hindu College, University of Delhi. Among his many academic accomplishments include Masters in Public Policy from Texas, United States, and PhD from Anna University, Tamil Nadu. In his illustrious tenure, Dr. Atulya Mishra has been chosen for important assignments such as Additional Chief Secretary, Revenue and Disaster Management Department, Principal Secretary, Industries Department, Chairman, Titan Industries, and Chairman, Chennai Port Trust. Dr. Atulya Mishra has worked as Commissioner, Social Welfare Department, Joint Commissioner, Prohibition and Excise Department, District Collector, Villupuram, and Additional Collector, Madurai and Salem. Dr. Atulya Mishra has also served as Chief Resident Commissioner, Tamil Nadu House, Delhi. Dr. Mishra also has authored several books, including Oxygen Manifesto, A Battle for Environment, and Vultures of Paradise. Our next esteemed panelist is Dr. Subodh Agarwal. Sir also passed out from Scindia School in 1983, Vivekanand House. Dr. Subodh Agarwal is a senior officer in government of Rajasthan who joined the Indian Administrative Service in 1988 and has a distinguished record of public service spanning more than 3 decades. Currently, he is working as Additional Chief Secretary, Mines and Petroleum Department, Public Health Engineering Department, and Groundwater Department. Dr. Subodh Agarwal completed his Bachelor's of Technology degree in Civil Engineering from IIT Delhi in 1987. Among his many academic accomplishments include Masters in Public Policy from Princeton University, United States, LLB from CCS University, Meerut, and Doctorate of Philosophy in Economics from University of Rajasthan, Jaipur. Sir has worked as Additional Chief Secretary, Energy Department, CMD Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited, CMD Rajasthan Urja Vikas Nigam Limited. He has also been handpicked for demanding assignments for organizations in crisis with specific mission.
He also worked as the head of state level committee for interstate migration and head of coordination committee overseeing the return of Indian nationals from abroad. Dr. Subodh Agarwal has worked as managing director in Rajasthan SC Development Corporation, collector and district magistrate Bikaner and Bharatpur, deputy secretary planning department, director women and child development department, registrar University of Rajasthan, additional commissioner command area development Bikaner, special secretary rural development, divisional commissioner Bharatpur and Udaipur, member board of revenue Ajmer. Dr. Subodh Agarwal also worked in Government of India as private secretary to the Minister of External Affairs, private secretary to Minister of State for Agriculture, Consumer Affairs and Public Distribution System, private secretary to Minister of Tribal Affairs, and finally as resident commissioner of Rajasthan in New Delhi. Our next panelist, also equally distinguished, is Sri Kamaneshish Sen. He passed out from Scindia School in 2001, Jyotiba House. A 2014 batch Indian Police Service officer of West Bengal cadre, Sri Kamaneshish Sen is a metallurgical and material science graduate from NIT Durgapur and postgraduate MBA from IIM Ahmedabad. He is also a recipient of the Young Alumni Achiever Award from NIT Durgapur. He is recognized as one of the 40 promising global leaders in policing under the age of 40 years. He has been awarded National Award 2022 for Best Electoral Practices by Honorable Vice President of India for his drone monitoring system in elections. He has also received the National Intellectual Property Awards 2021-22 for the Best IP Enforcement Unit in the country. He has also received Chief Minister's Police Medal for Commendable Service, among many other awards including FICCI Smart Policing Award, Squash Award, Aditya Birla Corporate Social Responsibility Award, Governance Now Award, and State Women Commission Commendation. As a police officer, Sri Kamaneshish Sen has held positions of SDPO Serampur, Additional SP Hooghly, Deputy Commissioner of Police Newtown, SP Barupur, South 24 Parganas, and SP East Burdwan. He has also worked in the private sector with stints being in the Hinduja Group and Capgemini. Kamaneshish sir is passionate about technology in policing and community policing, about which we will discuss more in the ensuing session. Our fourth guest is Sri Gaurav Singh Guraiya. He is a CAPF officer. He got All India rank 2 in 2006. He is a very recent entrant to the panel, so I couldn't take out all the introduction. Forgive me for that. We'll ask him when he is on the stage. He's done his master's in history from Delhi University, Hansraj College, and he has served in Cobra unit as commanding officer. So I would now request all of our distinguished panelists to kindly come on stage. We'll try to keep the session interactive. Towards the end of the session, we'll try to take some questions from the audience. Decision to become a civil servant, sir, starting with you. With due regards, I see many seniors who have literally seen us with our pants down. It's very difficult. He has given a long introduction. Seema Didi is here. Her father, we fondly remember, late Dr. Atmaram Sharma, actually told us how to spell things. He was our housemaster, a very strict and a very kind housemaster. Dr. Shiv Shankar Menon has left, I think. I was in the external affairs. He was a foreign policy expert. And Vikram Misri, again he is missing. I wish I could have responded. He was the one who taught us that there are 5 laws of Newton. It took us many years to correct ourselves to actually find out which were the other 2 which were not by Newton. I have seen a lot of things happening. Actually, Ruchira, are you around? Okay. See, many questions which were addressed to the previous panel
actually should have been addressed to us. I remember that joke. It's a very serious joke. When me and my wife, we don't fight, so we were, it's an example, it's a way of saying things. We never had a fight. So this old gentleman and they were both taking a stroll, and a young man like Yashwant came and said, आपकी लड़ाई नहीं होती जी? नहीं होती. क्यों? वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है. मैं बॉस, मैं सारी बाहर की चीज़ें डिसाइड करता हूँ. इंडिया को कौन सा INS बनाना है, अक्साई चिन में हमारी क्या पॉलिसी फिलॉसफी होनी चाहिए, अमेरिका और चाइना क्यों लड़ रहे हैं, अगला सुपर पावर क्यों होगा. तो भारत में संविधान ने बड़ा क्लियर कर दिया बॉस कौन है. ये एक्सटर्नल अफेयर्स वाले ये डिसाइड करते हैं कि भाई और देशों को हमें क्या गोलियां देनी, और ये डिफेंस वाले भाई हम सुरक्षित रहें, बाकी काम हम हाउसवाइफ हम डिसाइड करते हैं कि आज खाना क्या बनेगा, आज बड़ा आदमी क्या बोलेगा, नाश्ते पे कौन आएगा, गाड़ी कौन चलाएगा, बच्चे स्कूल कब जाएंगे. वी आर हैप्पी विद आवर वर्क. वी एज सिविल सर्वेंट्स एक्चुअली आर द वंस who deliver. और हम लोग practitioners हैं. See, you ask me to tell about my job, I can't describe because it changes every day. It's like a chameleon. और बहुत सारी बातें लोग कह गए, अब है नहीं तो मैं जवाब देना चाहता. IIT क्या है? I'm a product of IIT. डायरेक्टर कौन था 5 साल में, हमें पता नहीं चला डायरेक्टर कौन है, irrelevant. 7 IITs के डायरेक्टर नहीं है तो इससे क्या IIT का स्टैंडर्ड गिर जाता है. और अगर मुझे नहीं पता है कि IIT क्या है तो ये IIT की गलती है. सुबह सुबह 1999 में 8 साल की शादी के बाद संडे को हम कुछ अखबार पढ़ रहे थे. मेरी वाइफ भी ब्यूरोक्रेट है, IRS में है, इसकी सीनियर हैं. उन्होंने मेरा अखबार ऐसे झपटा, क्या है? अरे तुम्हें पता है बिल गेट्स क्या कह रहा है? तो मैंने कहा क्या कह रहा है? तो बाय चांस उनके पास शायद वो दूसरा अखबार था. तो उन्होंने कहा बिल गेट्स कह रहा है IIT इज इक्वल टू बर्कले, स्टैनफोर्ड एंड MIT. तुम भी IIT के हो? I just started reading my paper again and I said, हाँ मैं IIT का हूँ, पर तुम्हें अब पता चला है शादी के इतने साल बाद. किसी ने भी, सर आप सब बहुत सीनियर्स है, विद ड्यू रिगार्ड्स सर, किसी ने हमारी डिग्री आज तक नहीं पूछी. हम अपने आप उनको खोल करके बताते रहते हैं, क्योंकि कैपेबिलिटी कागजों से नहीं होती सर, कैपेबिलिटी आपके पास होती है. ये डिग्री तो केवल एंट्री पॉइंट है. आई वेंट टू प्रिंसटन, थैंक यू. आई वेंट टू प्रिंसटन एंड एक्चुअली लोग समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स ऐसे ही चले जाते हैं, भाई सरकारी हैं चले जाएंगे. सर आई गेव GRE आफ्टर 20 years of service. That time it was 800 and my score was 800. अब GRE बदल गया है, और वो भी इसलिए डिसाइड किया कि बोर हो गए IAS से, बिकॉज मोनोटनी बहुत है. हालांकि जितनी वैरायटी हमारी सर्विस में है उतनी ना डिफेंस में, ना फॉरेन में है, ना किसी और सर्विस में. सर एवरी डे इज ए न्यू डे. The kind of degrees I was, one fine day the government says I was sent to Australia for a training. गवर्नमेंट ने बॉन्ड दिया 2 साल तक चेंज नहीं करेंगे. so, इससे पहले कि मैं वापस आता ऑस्ट्रेलिया से मेरा चेंज हो गया. प्लानिंग से निकाल करके डायरेक्टर वुमेन इन चाइल्ड लगा दिया. मैं कहा यार, तब तक आई हैड ओनली 1 चाइल्ड. तो मुझे साहब फरवरी में लगाया, और शायद दीदी आपको पता होगा कोई इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग डे होता है. नाउ इट्स अ चैलेंज सर. आपकी एक बीबी एक बच्चा है,
और आपको डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड लगा के हाउ ब्रेस्ट फीडिंग इज नेसेसरी, इस पर सर दिस इज आवर चैलेंज सर, एवरी डे वी फेस द चैलेंज. With due regards to the seniors, we are facing those challenges every day, sir. हर रोज नई चीज है. हम रोड्स की बात करते हैं, कितनी बढ़िया रोड्स है अमेरिका में. आज जयश्री आई हैं. कौन सी एक्सप्रेसवे से आई हैं जयश्री दीदी? सर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, 228 kilometers we covered in 1.5 hours. 5 lane. हम मैच, see what happens is our starting points was so low. See, we started with a handicap. आप में से कुछ लोग पोलो खेलते होंगे शायद या जानते होंगे. It's a handicap. You start with what was our school, what was our college, what universities we had, were we producing steel, were we producing coal? And now also, with due regards to media people, हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक मीडिया है. आप अखबार खोलिए, इतने लोग मर गए, इतने लोग ये हो गया. तो ये 11 राजस्थान, आई विल टॉक स्पेसिफिकली ऑफ राजस्थान, 11% ग्रोथ आ कहाँ से रही है? ये उन्हीं 3/4 अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट से आ रही है क्या? ये गरीबी की आज कोई बात नहीं करता, हंगर की कोई बात नहीं करता. वी हैव डन थिंग्स, द ओनली थिंग इज वी डोंट हैव फेथ इन आवरसेल्व्स. हम खुद नहीं मानना चाहते कि हमारी कैपेसिटी है. वो जो एग्जाम्पल दिया गया कमांडर, नेवी कमांडर साहब ने, कि यहां नहीं पूछा अमेरिका रिटर्न हो के आ गया तो पूछ के. मैं I would like, with due regards to others also, we are crisis managers. And as Einstein has very well said, if you're a genius, you don't need to show it every time. Do it when you need it. तो मेरा तो इतना सा था, मैंने बहुत सारी चीज, डेमोक्रेसी. सर, डेमोक्रेसी आपको लगता है कि हमारी डगमगा रही है, बहुत सारी बातें होती है, तो फिर गवर्नमेंट कैसे चेंज होती है? कैसे हर साल राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में हम अखबार कुछ भी पढ़ ले. सर, डोंट, फर्स्ट थिंग इज दैट डोंट रीड योर न्यूज़पेपर्स इन द मॉर्निंग, रीड योर न्यूज़पेपर्स इन द इवनिंग, एंड डोंट वॉच अ टीवी चैनल टिल यू आर ओवर फॉर द डे, बिकॉज वहां पर एक चीज ही दिखती जाएगी. सर, जिस दिन ट्रेड टावर्स गिरी थी, उस दिन वो इतनी बार आया टीवी पे कि ऐसा लगा कि बहुत सारे देशों की बहुत सारी टावर्स पता नहीं कितनी ध्वस्त हो गई हैं. तो सर, मैं I don't know what to say, but I want to reorient the previous panel's discussion, which was about foreign affairs, about defense. Let's talk brass tacks in the military's word. And I would like to modulate my answers and our answers to the way you want us. How do you want from us? We'll try and answer that. Crisis management, elections, poverty, hunger, social security, roads, water, electricity, hospitals. Tell us. You can see the change. You can see the change. You come to Delhi, after 5 years you'll see the change. You go back to Rajasthan, if you are from Rajasthan, you will see the change. So I want to start with that. ये जो क्वेश्चन पूछेगा ये तो सब बनाए हुए हैं, फ्रेम्ड है. अपने रतुल्ला ने बता दिया था कि ये क्वेश्चन तो पूछ लेना, बट एक्चुअली जो है आपको जो पूछना आप बताओ. So this is, I will stop here, but I have lot of things to say. I want to share 30 years we've grown from literally doing nothing. आत्माराम शर्मा जी के यहाँ से हम दूध मांगते थे, दीदी निकाल करके ला देती थी कि अरे कहना मत. तो इस तरह की चीज से निकल करके आज इस लेवल पर आए हैं. तो ऐसा लगता है, कुछ अखबार पढ़ते तो लगता है सब गलत हो रहा है, और फिर जाके दिन भर मेहनत करके आते हैं और कुछ करते हैं तो लगता है कितने बड़े बड़े मिशंस चल रहे हैं. सर, आज बिजली नहीं जाती. आई रिमेंबर आई वाज SDM, आई वाज कलेक्टर. दंगे होते थे सर पानी पे और बिजली पे.
आज 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी कम से कम शहरों में तो है. चल रही है कोल क्राइसिस तो चलती रहेगी सर. इट इज अ स्ट्रगल, बट स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ ग्रोथ. So this is I want to say and stop. My other speakers are here and we have already shot previous sessions. So off to you. Atulya sir, you are the next. Atulya sir, we would like to hear from you. If you will continue with Subodh sir's. No, he has his own experience. Yeah. He single-handedly was handling the corona crisis of Tamil Nadu, which was adjudged the best managed corona state, and we were the second. And he has also found time to write books. I don't even find time to read books. Yes. Yes. Chalo, you have a question or should I? Sure sir. पहले यार वो डिफेंस और एक्सटर्नल वाला तो ठीक कर दे. Actually, there's another Indian sitting in the audience. Once he came to Chennai. And those days Chennai was not so well visited. So Deepak Gupta was with me, and in the morning at around 5 o'clock, I told him, let me take you for inspection of dairy. So he was thinking I'll take him to various dairies and milk booths. I had a stick in my hand. We would go from one place to the other. There's time coins used to be put into a system and then bottle used to be. So we found anybody whose internal milk supply system was unsealed, I would just take out my stick and start beating him. That was the justice we had to do at those days. And Deepak was finding it very funny that from one coin vendor to other coin vendor, we were only doing this. So we have taken, from those days, today you don't have any milk crisis in the country. I remember when in earlier days, milk had to be given for even weddings by getting a kind of a special permit. I remember my chief minister, there used to be a very famous chief minister, Jayalalitha ma'am, as you all know. She had a fabulous wedding in Chennai, and they demanded 30,000 liters of milk. Now, that used to be our crisis, how to get that kind of milk, how to deliver it to those places, how to then ask for the bill, how to get the money back from and if you don't get money, how to then handle the CBI and the vigilances of the world. So we came from those days that when we used to call a village officer to suspend him, we would be asking him to bring all the village records along with. He will not be told that you are going to be suspended. Because if he doesn't bring the village records, even if you suspend him 100 times, he will still be the village officer. Because that record was everything. So from those days when we had manual records, then we had computerization of records. Computerization of records at that time we thought that it's kind of an archive, kind of a phenomenon. कि हम लोग सारे कंप्यूटर में लगा देंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो यहाँ से भी निकाल लेंगे. But then, very soon, it started happening that now you can online get into your revenue records. From a computer, we could make it. Now it is from your mobile you can access your RAN record. And now what is happening is you pay or pay property tax. You will also come to know what is the electricity bill pending. You will also come to know what is the water bill pending. Whether your records have been actually registered in your name through the registration department. All these things, have been done in this period of 20, 25, 30 years. Disaster management. Any flood, any cyclone, hundreds of people will die. Now there will be damage, there will be destruction. But you will hardly see anybody dying due to a cyclone. You will hardly find anybody really distressed out of a flood. They will be evacuated. We actually know where the water can come in. I was managing the deluge which happened in Chennai. There was a major flood which happened. Now we have markings that in 100 years water level has reached up to this level.
So all those areas where people live up to that level are evacuated 3 days ahead or 2 days before. So you'll hardly find anybody dying of a disaster situation today. A lot of things have happened in this country last 20, 25, 30 years. IT has come in a big way. There used to be departments which used to be very important. For example, now the governments are thinking that we will dispense with the post of village officer. There is no need for a village officer. All your certificates are online. Your revenue records are online. Why should we have a village officer? There is no need for a beat constable. We can probably provide this activity as a kind of to people. Now the think tank is thinking in 2050 we should come with an idea of living without governments. We should be under blockchains, there should be artificial intelligence. And I'm telling you, this is just not a concept. We are moving towards that. We will not be governed by anybody. We may be having some foreign policies, some defense policies, which will be done by some people there. But otherwise, the day-to-day governance, the water supply, the electricity supply, this will all be automated. It will be all blockchain. There will be an artificial intelligence working ahead of us. And we will be available for doing many other things. So these are a few things, a few concepts which have been emerging over the years. And of course, the biggest thing which is happening is that everybody around us is having a camera. Everybody around us is actually recording what we are saying. I came here for a function, and there was some theft idols which were brought from America, and it was being given back to the state governments. And I remember after some time they said that something has gone viral, that you were sleeping in that function. I even didn't remember I was sleeping. I might have just dozed like that for a moment. Or maybe just closed my eyes or taken a blink, and somebody had taken a video, and it was all over Tamil Nadu that somebody was sleeping when the titles were given. But then there are ways and ways to topple these situations. They say that if you want to bury somebody, you bring him to the second page of the Google search. If he's gone to the second page, he's buried already. So you have to then put some more information into the system so that the sleeping goes away. So you put something else, put some more photographs, put something more, ask one of your social guy to, he will put some more news over it, and that news will be forgotten. So that is how we are battling all this on a day-to-day basis, trying to emerge out of situations, create problems, solve problems, and that is what our life is. Kamnashish sir, over to you. Good afternoon, sirs. सबसे पहले, in fact, I think I'll speak in Hindi, English, both, as my honorable sirs have been doing. Was I speaking in Hindi? बीच में सर एकदम मैं सुन रहा था carefully सर. तो सबसे पहले, in fact, in the very outset, at the very outset मैं बहुत ही careful रहूँगा कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं सर. Obviously सिंधिया सीनियर तो है ही, बट मेरे चीफ सेक्रेटरी सर जो है अभी वेस्ट बंगाल के, उनके बैचमेट भी है, दोस्त भी हैं. तो जो चीज मैं यहाँ बोल के जाऊंगा वो इन टोटो सर को सुनाने वाले हैं, तो मेरी नौकरी खतरे में. तो मैंने तब से मैं यही सोचा था कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, बिकॉज एनीवेयर विच आई गो आई एक्चुअली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एनीवेयर विच आई गो, एनी पब्लिक फंक्शन और एनीवेयर, आई मेक श्योर कि पहले ही पूछ लेता हूँ भाई मीडिया तो नहीं है इधर उधर सबसे पहले, because you actually don't know what, आजकल आप लोगों ने, you all would have seen the deep fake videos and everything which is going, where, in fact, it will be my video and, and they're being in the police. All I can say is that the criminals are always a notch ahead of us. तो यही होता है, सालों से चला होता है, भैया चोरी होने के बाद ही क्यों पुलिस पहुंचता है, but क्या करें अब, but anyways, so at the very outset, thank you so much to the Sindhian fraternity, to Sobha for having me here. एक दिन की बस छुट्टी मिली है संडे को, मुझे बोल दिया गया भैया जो काम है एक दिन में आओ, एक दिन में निपटा के आओ, from my boss, from my head. तो it's lovely to be in Delhi and lovely to meet everyone from the Sindhian fraternity. तो ये सुबोध सर जो बोल रहे थे, मतलब मैं
फर्स्ट वाला सेशन एक्चुअली मतलब बहुत ज़्यादा भारी हो गया था मेरे लिए. मतलब मैं उतना डिप्लोमेसी वगैरह की सर बात नहीं कर पाता हूँ. मतलब मैं तो ज़मीन वाला इंसान हूँ, एकदम ऑन द स्ट्रीट ब्यूरोक्रेट हूँ, ऑन द स्ट्रीट फाइटर हूँ. तो मुझे एक्चुअली पता है मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है. एंड आई डोंट इवन नो व्हाट इंडिया इज, वेयर इंडिया इज मूविंग. आई एम सॉरी, आई एम बीइंग मायोपिक, बट दैट्स हाउ इट इज सर. मैं बोल सकता हूँ मेरे स्टेट में क्या हो रहा है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, मैं क्या कर पा रहा हूँ. तो फर्स्ट सेशन सुन रहा था मैं. आई ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट. और एक बार आप पुलिस में, आई मीन यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आपको जो अटेंशन स्पैन होता है ना, वो समहाउ कम हो जाता है सर. मतलब अब कोई मुझे अगर 10 पन्ने का पढ़ने देता ना, सबसे पहले रिपोर्ट में बोलता भैया इतना ऐसा क्या लिखा है जो एक पन्ने में तुम नहीं लिख सकते हो, व्हाटएवर. तो all I would be talking about is I would love to have feedback, I mean questions from the audience, and not be in a sermonizing or a preaching mode. But all I can say is that definitely Subodh sir jo bol rahe the, you were saying that there's been many changes over these years, and we are still to go. There's a long way ahead. A chota sa example, I'll just give a small example. Again, main apna example de paunga. I'll talk about my district, my state. I'm not erudite enough to give you examples of what India has been thinking and kya chal raha hai kya nahi. So elections, sir bol rahe the, we can talk about elections. 2021 elections, again Bengal में elections, मतलब साल के ना जिंदगी के 2 साल कम हो जाते हैं जब भी कोई इलेक्शन होता है. अगेन मैं रिकॉर्डेड तो नहीं हो रहा हूँ कहीं पे. हाँ ठीक है. वैसे मैं बहुत खुश हुआ. सबसे पहले मैं देखा बोथ सर, मतलब राजस्थान, तमिलनाडु, बंगाल, सो वी आर ऑन द सेम पेज. और इफ यू गेट द ड्रिफ्ट. सो मैं बहुत बड़ा ही खुश हुआ कि हम लोग सब सेम ड्रिफ्ट में ही है. तो मैं बड़ा ही खुश हुआ कि आज तो दिल खोल के बात कर सकते हैं. And yeah, I was talking about elections. So 2021 में elections था. I was the SP of my erstwhile district, Baruipur in South 24 Parganas. I don't know how many of you have traveled to Bengal and to that part. तो पूरा जो सुंदरबन है, the entire Sundarbans actually used to fall under my jurisdiction. Now वहाँ पे मैं गया, and ये होता है कि एक island पे when I visited the island, they were like, lot of crowd, 400, 500 people, in the Sundarbans. So I was, I told my officer in charge, I mean, bhai, itne log kyun? I mean, why are there so many people? But sir, this is the first time in the history that SP साहब इस island में पधार रहे हैं. So, and that time I realized कि यहाँ पे कोई भी अगर incident होता है, it's so difficult. I mean, आपका island में there is only 2-wheelers and 3-wheelers. जो पुलिस का जो vehicles होता है, vehicles are not. It falls under the UNESCO World Heritage. So it's so difficult that to traversing. अगर एक incident होता है तो पुलिस स्टेशन से उस island में you have the fast interceptor boats from one island to the another. तो इंसिडेंट जब होता है पुलिस को टाइम लग जाता है मिनिमम, लाइक आई कवर्ड इट माई सेल्फ, 3 से 4 घंटे. तो एसपी जो आपका 100 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है वो बार बार पूछ रहा है भैया पुलिस क्यों नहीं पहुंची है, पुलिस क्यों नहीं पहुंची है. जब खुद जाके देखें कि ऐसा सिचुएशन है, देन यू अंडरस्टैंड, देन यू एक्चुअली अप्रिशिएट द सिचुएशन, ग्राउंड सिचुएशन व्हाट इज देयर. सो देन आई वाज थिंकिंग दैट इलेक्शंस, एंड एज आई वाज सेइंग, बंगाल में इलेक्शंस, एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्शन इज अ बिग मैटर. You have the election commission ने जो किया था, I can't even, I mean, honorable election commission. So yeah, there's a lot of pressure, and so उस time मैं सोचा that I thought that why not use drones to monitor such inaccessible places. So I had to take permission from the election commission, give them a a sort of a one pager note that this is what I want to do. So उन्होंने पढ़ा, and then I was questioned that you think it should work. I said, this is the first time in any election in India, an entire assembly constituency is being covered by drones on the polling day. तो सोचे कि यार करने दो, नहीं होगा, छोड़ो, रहने दो. But we did it. It was in 2021. उस time पे we had used the Mavic 2 Pro drone, which has a flight time of around 40 minutes. So we had a huge backup. एक तो मुझे 9 drones चाहिए थे, 9 different islands cover करने के लिए. 9 drones मिलना मुश्किल हो रहा था कैलकाटा के आसपास. So however we managed to hire the drones from Bangalore and other parts. But it was a success. एंड उसका डिटरेंट इफेक्ट ऐसा हुआ कि पोलिंग डे पे उस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों ने डर के मारे, दे डिडंट इवन ट्राई डूइंग एनी नॉनसेंस. सो दिस जस्ट एन एग्जांपल दैट एंड सो we keep on trying and we keep on thinking. I never, talking on my personal front, I have been quite a good student, बोलूंगा सिंधिया स्कूल में, toppers whatever,
जो भी ठीक ठाक गुरैया That's a lie. तो That's a जो lie. भी जो That's a भी blatant lie. तो जो भी मतलब ठीक ठाक स्टूडेंट था. So never in my life I thought I would join the services because I never had this plan. My dad was a doctor, so I intended कि भाई I wanted to go to the IIT and then probably abroad जाके anyways. But life took a different turn. I could not get into IIT, so that was a major setback in my life क्योंकि मुझे लगा था यार हम लोग 4-5 लोग जो ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई में IIT में घुस जाएंगे from Scindia School. However, I went to NIT. अब उसके बाद ये हुआ कि आजकल तो इंडिया में ग्रेजुएशन कौन पूछता है, एवरीवन इज अ ग्रेजुएट, ये भी ग्रेजुएट, तो पेरेंट्स का भी प्रेशर था एंड एवरीथिंग. सो सोचा कैट दे दिया. देन आई वेंट टू IIM अहमदाबाद. IIM अहमदाबाद के बाद आई गॉट रिक्रूटेड. माय वाइफ हु आल्सो हैपेंस टू बी इन द सर्विस, शी इज अ जॉइंट कमिश्नर इन IRS सर. IIM अहमदाबाद में जो भी अब वही है ना मीडिया सर जो बोल रहे थे प्लीज डोंट रीड द न्यूज़पेपर एंड डेफिनेटली नॉट द 24/7 न्यूज़. IIM अहमदाबाद में सबको लगता है कि सबको 1 करोड़ की सैलरी से निकलते हैं. ट्रस्ट मी. My wife thinks that I am the biggest duffer of the batch of IIM Ahmedabad because I could not manage a 1 crore salary. मतलब ये है मीडिया का जो perception. Anyways, so after IIM Ahmedabad, I got into a general management role. I was in Mumbai, then I was in London. London जाके मुझे ऐसा लोगों को लंदन बड़ा पसंद आता है, the grey skies and the changing weather and everything. So वहाँ जाके मतलब मेरे को लगा कि what the hell am I doing with my life? Do you really want to be in this sort of position for the next 30-35 years of my life? तो मुझे हमेशा आंसर मिलता था नहीं यार नहीं मजा नहीं आ रहा, मतलब पैसे वैसे तो you're earning. So किसी मतलब उस टाइम पे मेरे IIM के बैच में किसी I don't know मजाक में बोल दिया था भैया सिविल सर्विस दे देना, इतने सारे एग्जाम्स दिए होते हैं जिंदगी में. तो यार सिविल सर्विसेज के लिए आई ऑलवेज सर ये होता है सिविल सर्विस पे यू टेक अ ब्रेक, यू स्टडी फॉर लाइक यू नीड टू बी इन अ क्या बोलता हूँ वो मतलब सॉर्ट ऑफ आपको ध्यान करना पड़ता है एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के एंड एवरीथिंग. तो मैंने बोला यार देते हैं. इसी टाइम पे थैंकफुली एक एप्टीट्यूड CSAT बोल के एप्टीट्यूड टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इन दैट टाइम. तो मैंने यार टू बी वेरी ऑनेस्ट आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग इट सो दैट आई डोंट रिग्रेट इन माय लाइफ. माय डैड वाज वेरी कॉशियस दैट टाइम आल्सो, ही वाज सेइंग डोंट गिव. But somehow I've always been what my dad used to say, I always try to do the opposite. Anyways, so मैंने और जिद में दे दिया कि देखे तो देखते हैं. And surprisingly, I don't know, I was lucky or unlucky with the first. I mean, I cracked it in the first attempt. The first choice था IAS ही पता था because actually I knew the work of collector. मतलब थोड़ा बहुत what a collector or a deputy commissioner or a collector used to do. पुलिस में तो मुझे कोई मतलब I didn't have a single clue भाई. पुलिस इनफैक्ट पुलिस से मैं हमेशा डरता था. नेवर अभी भी डरता हूँ, अलग बात है. सो एनीवेज सो देखा कि IPS, उसके बाद ट्रेनिंग एंड ग्रूअल ट्रेनिंग आर्म्स ये वो एंड आई वाज लाइक कि कहाँ जा रहा हूँ क्या जा रहा हूँ. उसके बाद वेस्ट बंगाल कार्डर. वैसे माय फर्स्ट चॉइस वाज MP कार्डर. आई स्टिल कंसिडर MP टू बी माय होम बिकॉज ऑफ सिंधिया स्कूल. सो एनीवेज आई वेस्ट बंगाल कार्डर में आके इट्स अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो. वहां पे पुलिस को पुलिसिंग के साथ साथ बाकी बहुत कुछ करना पड़ता है. So there a IPS officer is not just IPS officer, he's given a whole lot of a job that anything which happens DM और SP को साथ में anything which happens in the district कभी भी SP को छोड़ के बात नहीं किया जाता. So what happens, I mean it differs from state to state. As I said, I can talk about Bengal. In Bengal the police is actually involved in lot of things, I mean including policing. So मुझे that's why I said including policing. So मुझे in fact I was fortunate to have some of the great principals of my time and I always remember them fondly. I mean most of the time I spent was under Mr. Amarnath Dar. So I was greatly influenced by him and he was also quite fond of me. And then N.K. Tiwari was for 1 year when we were in class 12th. So Amarnath Dar sir एक चीज बोलते थे जो मैं हमेशा पुलिस भैया गुंडा बनना है ना, सबसे बड़ा गुंडा बनना तो ये सब तुमसे डरे. तो मैं हर टाइम यही डायलॉग बोलता हूँ आपको कि कोई भी क्राइम कॉन्फ्रेंस हो भाई सबसे बड़ा गुंडा जो है पुलिस स्टेशन का आप SHO है, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई बात नहीं करेगा. तो एक बार एक OC ने मुझे पूछा सर बड़ा अच्छा डायलॉग, ये डायलॉग कहाँ से सीखा मुझे. सो आई हैड टू टेल हिम दैट ये मेरे प्रिंसिपल सर का डायलॉग था स्कूल में. सो प्रिंसिपल सर का डायलॉग था स्कूल में जो आई कीप ऑन सेइंग. सो सिंधिया एंड आई रियलाइज दैट इन द फोर्ट टिल वी वर देन क्लास 12 द वर्ल्ड इज सच अ नाइस प्लेस सर. द वर्ल्ड इज सच अ नाइस प्लेस वेयर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. एवरीथिंग यूज्ड टू बी. नाउ आई हियर द किड्स आर इवन मोर पैम्पर्ड. हम लोग तो मतलब बट स्टिल एट आवर टाइम वी वर आल्सो पैम्पर्ड बट नॉट दैट मच व्हिच इज करंटली. बट तो इट वाज द वर्ल्ड वाज सच अ नाइस प्लेस. यू हैव सच अ नाइस व्यू ऑफ द वर्ल्ड. बट आउटसाइड फोर्ट जैसे ही हम लोग गए तब पता चला कि असली में दुनिया क्या है. सो सिंधिया स्कूल
And what I, to be very honest, I think thanks to GD sir, thanks to Venkatesh sir for having this, because Gagan sir was cycling, and he was cycling across the my district falls between Delhi and Kolkata. Like if anyone has to travel from Delhi and Kolkata on road, you have to cross the district of Bardhaman. I have a 76 kilometer of highway. So Gagan sir had cycled. He was cycling. So I received him. I said, sir, please come. Sir, please, you're most welcome for a cup of coffee, kuch fruits. I mean, jo bhi. So I was telling him, sir, everything is fine, but there should be an annual event wherever, sir, wherever. So this sort of an event is very much required. I'll tell you how. It helps us to bond together. It helps us to actually, kabhi kisi ko zarurat pade, to it's very important. I'll just give you a small example again. I am Ahmedabad में मैं गया 2 साल मुझे कुछ समझ में नहीं आया मतलब क्या पढ़ाई गया I don't even remember half of my professors, but I remember we made a great bunch of friends out there, and these friends actually help us in networking. I'll give again a small example. मेरा एक दोस्त है, I'm in Bardhaman currently, so there is a lot of poverty etc. तो है ही. तो one of my very good friends, he is the founder of Urban Company. आपने सुना ही होगा, अभिराज भाल. So he is a very good friend of mine, my batchmate from IIM Ahmedabad. तो उसको मैंने कॉल किया, मैंने बोला भाई क्या हाल चाल है, बोले बढ़िया यार बढ़िया. मैंने बोला भाई एक काम करो ना यार, अर्बन कंपनी तुम मेरे डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च कर दो. तो बोला क्यों भाई क्यों करूं. मैंने तेरे को 2 फायदे हैं. एक, आई विल गिव यू 300 गाइज जो ऑल द उनके वेरिफिकेशन वेरीफाई करके बैकग्राउंड सब कुछ चेक करके आई विल गिव यू रेडीमेड टू 300 गाइज. मेरा ये फायदा हो गया कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्राइम रेट अपने आप कम होगा. सो होपफुली इन द नेक्स्ट 2-3 months विल बी लॉन्चिंग अर्बन कंपनी इन द डिस्ट्रिक्ट. So this is the whole, this is the whole essence of networking. This is the whole essence of how things work. So that's why I think it's a very nice step. And मैं और ज़्यादा ज्ञान नहीं दूँगा. वही सर अभी लोग फुसफुसा रहे हैं कि मेरे चीफ सेक्रेटरी सर को क्या बोलने वाले हैं कि लड़का बहुत सियाना हो गया है. So उधर से मैसेज आया है. No sir. So thank you so much. तो मतलब 2 सेक्टर्स को तो आपने 1.5 घंटा दिया और यहाँ छाए हुए हैं मतलब इतने सारे आप ये this is injustice, inequality. So, but anyways, with due regards for the next session, I'll define diplomacy for you, and it is written in the IFS officer's book, because when I was in the external affairs, they used to come and talk big. So I found that excerpt from the book which read, diplomacy is protocol, hyperbole, and alcohol. And actually it is. All that they do is throw parties, have huge gala dinners, have drinks and talk big. Come to the grassroots. इसकी जगह जाइए sir. देख कर आइए. I went to a village. They said sir nobody had come because Madam Vasundhara Raje had organized an outreach program. So we went off, far off. तो सर उन्होंने कहा कि कलेक्टर ही नहीं आया, आप तो सेक्रेटरी हैं. ऐसे अच्छा समस्याएं बताओ. रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, माफ करो. I collected 37 applications and one of my seniors told me, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ बैठे बैठे नहीं सुलझती. अच्छी सी ड्रिंक में वाइन लगा करके अपना 4 घंटे का डिनर केवल फॉरेन सर्विस वाले ही ले सकते. I am actually invited to a dinner tomorrow by the Danish embassy because their I don't know, prince या queen कोई आए हुए हैं, because we are signing an agreement राजस्थान and Denmark. तो उन्होंने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया, which I will be skipping because इसे 6:30 बजे डिनर होगा. तो मैंने रात को 10:30 की फ्लाइट बुक करा. उन्होंने कहा साहब 10:30 बजे खत्म होगा. 4 घंटे का डिनर केवल डिप्लोमैट्स ले सकते. So I have just been told that we are a little short on time. Gaurav sir, just 2 minutes. ऐसे मत करो यार. तुमसे भी जूनियर है क्या वो? नहीं सर, मेरे से सीनियर. भाई हम तो अपना टाइम लेंगे. 1 घंटे का स्लॉट सा सर. Unless the audience says, we go by the voice. Popular vote. How many people for our 1 hour? अच्छा, how many not for 1 hour? हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता. नहीं, we'll finish, please. Good afternoon, everyone. I'm Gaurav Singh Ghuraiya. I'm 2001 batch. Kamna Sheesh was my batchmate and was a house prefect when I was in junior school. And I'm ex-Daulat. As far as Daulat is old Vivekanand. Yes, sir. That's what I was about to come to. Why are you and I and
Atulya, not from Jayaji or Madhav. I was about to come to that as well, sir. Sir, it is a question, sir. It is a very important question. Everybody came from Jayaji and Madhav. Why not these bureaucrats? ये बच्चा है, sir. Can I answer this? Sir, there are no answers, sir. Jayaji and Madhav are doers. You are the talkers. हाँ sir? ज्योतिबा. मैं ज्योतिबा का हूं सर, नॉर्थ ब्लॉक। Jyotirba not block, sir. It's a question of Madhav plus Jayaji versus the rest. Good afternoon, everyone. अगर प्रेरणा की I'll go in Hindi because I belong to Gwalior. तो जो लोग सिंधिया स्कूल में पढ़े हैं उनको पता है कि ग्वालियर वालों के प्रति उनके मन में क्या इमेज होती है. So that exactly how was I. And then मुझे अलॉटमेंट में मिला दौलत हाउस. ऑलरेडी उसको गांव वाला कहते हैं. और वो ऐसा पीरियड था जब दौलत हाउस के पास एक भी ट्रॉफी नहीं आती थी. इनफैक्ट 2008 में इकलौती ट्रॉफी जो दौलत के पास आई थी वो ग्रुप बी क्विज ट्रॉफी थी. कमलाशीष ज्योतिबा से पार्टिसिपेट कर रहे थे. मैं और कमलाशीष दोनों बैचमेट्स हैं एंड जनकोजी हाउस से हम लोग काफी अच्छे दोस्त भी हैं. तो अगर प्रेरणा की बात करते हैं सर, तो वो आपने उसमें 3 इडियट मूवी में देखा ही है कि वो बच्चा पैदा होता है, उसका डिसाइड हो जाता है क्या बनेगा. सो in my case it was कि हाँ ये इसको किसी सर्विस में भेज देंगे. That's how it was decided. But when I came to दौलत हाउस, हमारे पहले हाउस मास्टर आर एस गर्ग सर होते थे एंड 8th क्लास से हमारे हाउस मास्टर थे वी एस सक्सेना सर. तो वी एस सक्सेना सर हिंदी के टीचर होते थे. मेरी हिंदी पे पकड़ ठीक थी क्योंकि मेरे पिताजी हिंदी के लेखक हैं. तो वो पसंद भी करते थे, पर वो पढ़ाने का तरीका थोड़ा दूसरा होता है ना, वो छड़ी वाला. तो मुझे एक ही एग्जाम्पल दिया जाता था कि तू सुबोध अग्रवाल की यस सर, That's how I came to know about you. तू उतना भी हुआ नहीं है जो तू सोच रहा है कि तू सर्विसेज में निकल जाएगा. So the only example, मतलब जो आप प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं. एंड मैं सर से आज पहली बार मिल रहा हूँ सर. व्हाट्सएप ग्रुप पे तो फॉलो करता हूँ क्योंकि विवेकानंद दौलत का ग्रुप है. बट यस, अगर इस हिसाब से कहीं वो एक उसको साकार रूप मिला है कि हाँ भाई आपका प्रेरणा स्रोत कौन हो सकता है सर्विस में जाने के लिए, तो सर ही है मेरे लिए, क्योंकि सर का ही नाम हमेशा मेरे पास आता था. आई ऑलवेज वांटेड टू मीट हिम. अगर पढ़ाई के विषय में बात करें तो यस, मेरे बैच में 2 टॉपर्स होते थे, सलिल जुर्ची एंड कमनशी सेन. हाँ, ये जितना भी बोले ये नहीं था बहुत ज्यादा. ही स्कोर्ड 93% इन 10th एंड आई स्कोर्ड 61. सो द डिफरेंस इज देयर. एंड his IQ was 142 and he didn't said कि मेंसा मेंबर भी है. तो मैं सोचता हूँ मैं बता देता हूँ. तो he was always the brilliant guy. सबको पता था हाँ ये आदमी बड़ा जाएगा. I wasn't one of them. मैं बस वो जो बैक बेंचर तो नहीं था, बट हाँ वो डी सेक्शन का टॉपर हुआ करता था. So that's how that's और हाँ ऑब्वियसली क्योंकि मैं ग्वालियर से था तो हिंदी पे पकड़ती, इंग्लिश ग्रामर में मैं फेल होता था, मतलब सप्लीमेंट्री के थ्रू पास होता था उस जमाने में. तो that's how I started. अगर हाँ बट सिंधिया, यस ऑब्वियसली सिंधिया स्कूल से जो मैंने सीखा है मैं शायद उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इट्स द डिफरेंस इज ह्यूज. इट्स वेरी वेरी ह्यूज. लेट मी टेल यू, लाइक मेरा गांव भी ग्वालियर में ही पड़ता है इन केस. तो नॉट जस्ट सिटी में, मतलब गांव भी ग्वालियर से ही है. तो एकदम ठेठ जो ग्वालियर वाले होते हैं ना, जो स्पोर्ट्स वगैरह में ठीक है. मैं तो स्पोर्ट्स में भी ठीक नहीं था बाय द वे, तो किसी लायक ही नहीं था ऑलमोस्ट. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आई वाज हैविंग अ डिस्कशन इन ऑफिस. तो वहां डिस्कशन चल रहा था बच्चों को कहां पढ़ाएंगे. एंड आई वाज लाइक कि मैं अपने बेटे को सिंधिया स्कूल में भेजूंगा बिकॉज ऑब्वियसली रीजंस. तो बोलते कि जरूरी नहीं है, तेरे डीएनए में आ चुका है तेरा स्कूल, वो ऑलरेडी सिंधिया स्कूल वाला बन चुका है. ही डजंट रियली नीड टू गो देयर. सो दैट इज द डिफरेंस दैट आई गॉट फ्रॉम सिंधिया. Surely, sir, but he's too small. He's just 4-year-old, but surely he'll come. Sir, now coming to my service part, because obviously it's very different from what sir has experience have shared. मेरे experiences सारे war torn zone में या disturbed area में. I started with Kashmir, then I commanded a Cobra sub-unit. चक्रव्यूह मूवी देखी है किसी ने? ओपनिंग सीन देखा है सर? वो मैं उसके बीच में ना जा चुका हूँ. ठीक है, I've seen that. चारों तरफ धुआं उड़ रहा है, ब्लास्ट हो रही है, गोलियां चल रही है, और आपको यही रियलाइज नहीं हो रहा है कि कौन सी गोली मुझ में लगने वाली है. एंड देन यू हैव टू कमांड 200 men.
एंड उनको सेफली ले जाना. So तो आवाज बताओ ना. ठक 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 ठक. sir, I'm not into theatrics. वो टक 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 कौन सी I'm आवाज not है? into theatrics, sir. I cannot. जब प्रॉब्लम आती है तो कोई आवाज नहीं सुनाई. Exactly, sir. टफ हो जाता है आदमी. उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है. And I mean, like, मुझे पता है कि मैं उस चीज को शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. बस हमेशा मेरा यही रहता है कि मैं जब जा रहा हूं अंदर और वापस आ रहा हूं तो जितने लोग लेके गया था उतने वापस लेके आऊं. मैंने सर कश्मीर में अभी भी श्रीनगर में पोस्टेड हूं और इट वाज सच अ ये इवेंट इस प्रकार का था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया छुट्टी लेके आने के लिए. तो वही 2-3 दिन की छुट्टी लेके आया हुआ हूं. तो कश्मीर बहुत पर्सपेक्टिव से हम लोग आजकल देख रहे हैं, सब जगह चल रहा है. जो मैंने कश्मीर देखा है, जो मैंने सीखा है, जो मेरी समझ में आया है, वो कुछ इस प्रकार का है कि वहां पे 87 से शुरू हो गई थी मिलिटेंसी एक्टिव वाली, 87-88 से. मैं 83 बॉर्न हूं, यानी मुझसे 5 साल छोटा जो होगा उसने जिंदगी में सिर्फ बंदूक बम ही देखा है. एंड दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट. वहां पे जिंदा रहने के लिए जो सबसे बड़ा गुण, वैसे उसे हम अवगुण कहेंगे, किसी को चाहिए तो वो होता है धोखा देना. दैट्स द ओनली वे यू कैन सर्वाइव दैट. उसके बाद मैंने नक्सल क्षेत्र में भी कार्य किया है. वहां पे भी मैंने ये चीज नोट करी कि जो धोखा दे सकते हैं, जो अपनी बात से पलट सकते हैं, वही सर्वाइव करेंगे. सो द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक्चुअली रिक्वायर्स बिट्रेयल. सो हमारे पास अलग नरेटिव्स आते हैं. न्यूज सर मैं नहीं देखता हूँ, 4-5 साल हो चुके हैं मुझे ना. मैं अखबार पढ़ना छोड़ दिया, जो कि मैं बचपन से हमेशा अखबार पढ़ता था. आजकल ना अखबार पढ़ता हूँ ना न्यूज देखता हूँ, क्योंकि मैं सब सामने देख रहा हूँ, मुझे पता है. बट यस, देयर हैज बीन अ चेंज. कश्मीर भी बदल रहा है आज की तारीख में. एंड होप इट गोज फॉर अ गुड थिंग. आई मीन अच्छा पॉजिटिव ही रहे. तकरीबन चीजें सही चल रही हैं. आई जस्ट होप कि वो वैसा ही होता है. नक्सल क्षेत्र में हम देखते हैं कि उनके लीडर्स ज्यादातर उनकी एज हो गई है. जो नए लीडरशिप, उनके पास बेंच में लीडर्स नहीं है. तो थैंकफुली इंटरनल सिक्योरिटी, बिकॉज मैं आगे ने कहा है उतना ही बोलो जितना तुम्हारा सत्य है, और मेरा सत्य इंटरनल सिक्योरिटी तक ही सीमित है. तो इंटरनल सिक्योरिटी एरिया में जो मैंने फील किया वो ये है कि यस, हम लोग पहले से काफी बेटर कर रहे हैं. एंड आई जस्ट होप और उसके पीछे मेन रीजन ये है कि जो सरकारी तंत्र है, लाइक सर सुबोध सर या सर की तरह, अगर वो लोग उसमें घुसकर अच्छे से काम करें. बिकॉज जब तक डेवलपमेंट अंदर तक नहीं पहुंचेगा, डेवलपमेंट कोई पॉलिटिशियन नहीं पहुंचा सकता है, वो सरकारी तंत्र ही पहुंचाएगा, वो मशीनरी ही, एडमिनिस्ट्रेशन ही पहुंचाएगा. जब तक वो सही से नहीं पहुंचेगा तब तक हम इस समस्या को, जो डिफेंस की हम समस्या, इंटरनल सिक्योरिटी की जो समस्याओं को डिस्कस कर रहे थे, उसका कोई निदान नहीं है. इनफैक्ट यहाँ पे बात हो रही थी, उसमें मैं मैंने नोट किया है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं डीयू से. हमेशा से जो दिल्ली में गवर्नमेंट होती है, आई विल नॉट से इंडियन गवर्नमेंट, दिल्ली की जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा से अपने जो बॉर्डर एरियाज होते हैं उसे पैसा देती है चुप रहने के लिए, शांत रहने के लिए. ये पॉलिसी अभी तक चलती आई है. 1987 के इलेक्शंस हो, चाहे कुछ हो कश्मीर में, यू हैव ऑलवेज पेड देम. बट चीजें बदल रही हैं एंड वी हैव टू कम टू अ पॉइंट जब हम उनको पे करना बंद करें. मतलब पे इन द सेंस कि आप कैश ना दें, आप डेवलपमेंट दे सकते हैं, आप जॉब्स दे सकते हैं. सो that's what I think that's all I have to say. Thank you, sir. Incidentally, Gaurav sir and Kamnashish sir were both batchmates in Sindhya, as he just told, and Subodh sir and Atulya sir were also batchmates in Sindhya as well as in service. Now we throw the floor open to the audience. Any questions that you guys might have, please feel free. Okay, sir, in the second row, please. Right, now you can ask the people who extend the time. नहीं से कर दो सर, कोई जो छोटे जवाब दे देंगे. No, we have two batchmates, so I need two questions. Okay. Wow, first Are you creating a record of sorts? First for Subodh, yours is a family of bureaucrats. You know, you, your wife, your father-in-law. So what's the discussion at home? I mean, what are the rules there? And is there anything like, you know, kind of rule at home? A kind of something you would like to share? What's the main? Two things, and very small.
I was never interested in the IAS. I was in IIT, all my people were giving those GREs, IIMs. So I went home in the third year, say, kya karenge? So my father was a professor, and every son represents his father's unfulfilled desire. So he says, तुम IAS दे दो. मैं कहा क्यों? क्योंकि मैं नहीं दे पाया. So I said कि अच्छा तो बहुत मुश्किल एग्जाम है. God has been kind, really. Any exam that I have given, I have qualified. So I said अगर नहीं हुआ तो he said ये बाहर पान की दुकान है ना, इसके बगल में थड़ी लगा लेना. This is a reality. So that bloody kick started me. ऐसे अगर नहीं हुआ तो ये थड़ी लगानी पड़ेगी जहाँ के लोग पान चबा चबा के वहीं पीक थूकेंगे. इलाहाबाद वगैरह में बहुत होता है. So that is the first part what got me into the IAS. Second is what happens in the family. Fortunately, we have multi-service representation on our dining table. So my wife is in the IRS IT, which is his service. My son is in the IRS Customs and GST and Narcotics. So, and my wife has made a rule. If you are in Jaipur, you have to have your meals together. Else you have to take permission, and WhatsApp is very active. So I have to actually say, not coming for lunch, CM meeting, and she is the boss. So we actually have such discussions from such areas, and I can relate some of them. I mean, they are so fascinating. My wife went for a raid, and they went to a Muslim area, Makrana mines. So she was representing the women. And they went to somebody's house and said, Hanji, they said, interrogate the ladies. You, so being a lady, she interrogated. She said, Haji Ali ki wife. 3 ladies came forward. So my wife said, I want Haji Ali's wife. So she said, "Main badi, main majli, main choti." And it was so easy. They did not require the interrogation because the old was old and the young was young, and everybody said this middle one has everything. So all that she had to go was open that middle one's almirah and found everything. This is how I mean, it's so interesting. It is so different. Like we have discussed why Flex company, I'm sorry, nobody's from Flex now. Why Mirage Group? You're from Flex? Okay. So what is the connection between Flex and Mirage Group? Now we have discussed that on table as to what went wrong and what Mirage could have done. Mirage is a huge group. What Mirage could have done to avoid it. So such kind of discussions which take place, I mean, my schedule during the Corona time was 10:30 in the night, CM's meeting, 7-8 people, Secretary CM, CS, Home Secretary, Subodh Agarwal, and one more. We take the decisions, 11:30 to 12 we come back home, whatever is cooked. If you find something in the fridge, have it. 2 o'clock, type your orders, ask your driver, go to at 5 a.m., go to Chief Secretary's office, get the orders signed and get them issued. We actually live a life of a servant. Typically, we are government servants. And we actually live life of a servant, but during the time of crisis. Baki to hum badshah hain. So crisis ke time mein jo hota hai na, and every day is new. And my father said, one day I was very upset. I said, kya ho raha hai din bhar subah se sham tak? Suman Sinha, if you have heard the name, Yashwant Sinha's son. Anybody from Renew? No. Both of us were in the IIT, same class, same this thing. Both of us gave IAS. I qualified, he didn't. He is a owner of a company which is 50,000 crores today. I have no regrets. Well, that I can't say which way the money was routed, but what I am saying is each day is a new day. And that is the great thing about this service. Thank you. Second question to Atul. This is about Srinagar. So it's a very personal question, but might strike a chord. It's not related to anything else. I might be attending a wedding of a friend's daughter in Srinagar in August.
Is that a good idea? बिल्कुल सर सर श्रीनगर में सबसे सेफ अगर कोई है तो वो टूरिस्ट। यू कैन एक्चुअली से कि जितने सेफ आप दिल्ली की रोड्स पर है उससे ज्यादा सेफ श्रीनगर है। एकदम डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। आई मीन आई कॉन्कर विद सर्स रिमार्क। श्रीनगर में टूरिस्ट बिकॉज आजीविका उसी से चलती है, दैट्स द सोर्स ऑफ द इनकम। टूरिस्ट सबसे ज्यादा सेफ है। टूरिस्ट लोकेशंस पे जो होगी वो आई बिलीव दैट्स यू नो, तो वो टूरिस्ट लोकेशन पे होगी। दोज एरियाज आर वेरी सेफ। वहां का लोकल आदमी नहीं चाहता वहां कोई इंसिडेंट हो, और ऑब्वियसली टेररिस्ट भी नहीं चाहता। Yes sir, definitely, definitely sir. Okay, so एक बस मैं सर को मतलब सर ने एक चीज बोला, ये क्या ऐसा क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, आप आपस क्वेश्चन नहीं, में? मैं बस ऐड करना चाहूंगा। वो डाइनिंग टेबल वाली बात से मुझे बहुत मतलब इतने सारे मेरे ख्याल आगे घूम पे। इट्स वेरी डेंजरस टू हैव यू नो वाइफ एंड आल्सो हस्बैंड इन सिविल सर्विसेज। आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मेरे को बहुत मतलब टेंशन हो गया था सर। मेरी मतलब माय वाइफ इज आल्सो इन द IRS। तो एक बार रेड करना था जीएसटी का मेरे डिस्ट्रिक्ट में, तो रेड वेड हो गया, मतलब वो आपका फैक्ट्री रेड वेड हो गया, बवाल मुझे पता तक नहीं। तो फिर पता चला कि बंगाल में इट्स वेरी कॉमन यू नो, मतलब कभी कहीं पे रेड वेड हुआ एंड यू नो 100-150 लोग जो भी है मतलब जगह मतलब रोड वोड पे आ गए, अवरोध करने लगे। तो वहाँ के ओसी ने मुझे सर ये रेड हुआ था। मतलब कौन सा रेड? तो सर वो जीएसटी का रेड। वो जीएसटी का इंस्पेक्टर है, बोला मैडम से परमिशन ले लिया, रेड भी कर लिया सब। बोला तुम क्या कर रहे थे? बोला सर वो तो मैडम से परमिशन ले लिया। मैडम मतलब मेरी वाइफ। तो मतलब एसपी साहब को पता भी नहीं है, उनके डिस्ट्रिक्ट में जीएसटी के ऑफिशियल्स आके रेड करके भी चले गए, और उसका जो आफ्टर मैथ है नो मुझे लेना पड़ा। सो इट्स वेरी डेंजरस। थैंक यू सो मच, बढ़िया सर। okay, so I have been getting frantic gesturing कि खत्म किया जाए। सर इज अगेन एंड खत्म अगेन किया जाए ऐसे नहीं करते। ऐसे बोल रहे हैं सर वो। अच्छा वहाँ ऐसा से इसको नहीं करोगे? Thank you everybody for attending, and thank you esteemed Thank you so much. Call Escavians. Now I would like to call Escavians Anjana Agarwal to give away the token of appreciation from Soba Delhi. Anjana Agarwal from SKV, Binu Malhotra from SKV, Jyoti Gidwani from SKV, Swati Singhania from SKV, and then we have with us Sindhian Seema Sharma.